Good morning, team. ET now today again has reported that land promoter Fosun is in talks with many funds, Advent International, Barings, Bain Capital, Blackstone, Carley, KKR. At current valuation, I think land is looking very attractive. So long-term investor can look at land. They are one of the largest injectable in the world. And they don't have any major problem with US FDA. So at current level, it is a decent investment pick. LODA QIP raised about 3,547 crores, which makes the company achieve minimum public shareholding thing. So the promoters have reduced their stake by 7.2%. Now public holding has become 25%. And the total subscription for the QIB was 5,350 crores. So that means there is a great demand for LODA. So we expect the stock to outperform going forward. Intellect artificial intelligence teams up with Insure MO to offer a fully integrated AI artificial intelligence enabled underwriting and policy admin for insurance sector. We don't track Intellect as a company, so we don't have a view there. Nelcast has informed exchange that power supply to their plant located at Gudur, Andhra Pradesh has been temporarily disturbed from Sunday, 10th December, due to transformer failure. So they expect few more days of losses. So it could be slightly negative for Nelcast, but they have made alternative arrangements. As budget is nearing, now we were looking at few companies, PSB project, Aluvalia contract, PNC Infra, HG Infra. These are looking very good. And PSP project also got a order for 115 crores in institutional and industrial category. So their order inflow for FY23 till date is 1,948 crores. We like PSB project, HG Infra in this segment, even Aluvalia contract in this segment. Thomas Cook wholly owned subsidiary Sterling Holiday Resorts announces opening of its resorts at Tiruvannamalai. It is in Tamil Nadu. It is an 8th resort in Tamil Nadu with 30 rooms and 3.5 acres of resort. It is a lease model. The promoter of the resort is not Sterling. It is operated by Sterling. MTAR signs a MOU with InSpace, which is our space technology ISRO company, for design development of 2 stage to low Earth orbit all liquid small satellite launch vehicle. So the order is about 400 to 500 crores. So whatever is a need, they will do it. It is a small satellite, payload less than 500 kg, and it is for a 3-year period. Positive for MTAR. Wabag, the water purifier company. Wabag secures industrial waste water treatment order in Romania worth about 260 crores. It will take 24 months for the implementation of the project, which is 30 million euros. And this is very interesting. India and Chinese troop clash in a line of control in Arunachal Pradesh. And there were clashes for 2 days, it seems. And it was in Tawang, Arunachal Pradesh. And many have been injured by the thing. So this is slightly worrying factor, but this news would have already impacted the market in the last 2-3 days. That is why market was a bit volatile. NTPC is planning to exit stake in PTC India after a raft of resignation from independent directors and allegation of mismanagement in PTC India Limited and its subsidiary PTC Financial. So no, this is negative for PTC and PTC Financial. So NTPC will at least get the stake. So positive for NTPC. With that, over to you, Brijesh. थैंक यू सर। अभी ये कॉल को हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते फंडामेंटल न्यूज से।
आलूविलो कॉन्ट्रैक्ट्स को ये इस पे एक अपडेट है। ये इनके जो जो बेनिफिशियरी जो इंफ्रा और इंडस्ट्रियल कैपेक्स में जो हमारे यहाँ पे कंपनी है, उनके काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में। ये लास्ट 5 डिकेड से वो ये यहाँ पर उनके एग्जिस्टेंस है। सो उनका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। जो उनके जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है और जो उनका जो ऑर्डर इनफ्लो है वो साइक्लिकल अप ट्रेंड में है। सो हमें एक्सपेक्ट हमें ये लगता है कि FY 23 में इनके जो एनुअल इनफ्लोज काफी अच्छे रहेंगे। उनके ऑर्डर बुक्स भी काफी अच्छे हैं, 76 बिलियन के करीब है FY 23 के लिए। और उनके जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो 70% है उनके क्लाइंट के बुक्स से। तो नॉर्मली ये ईस्ट एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया से आता है। ये जो अपडेट है वो पॉजिटिव है आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये जो इनके जो मैनेजमेंट के जो काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, सो उनके बैलेंस शीट भी काफी क्लीन है। तो उनके फ्यूचर ग्रोथ भी काफी हमें स्ट्रांग लगते हैं। हमारा आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाय रेटिंग है। हमारा टारगेट प्राइस रहेगा 650। और ये करीब करीब ये होगा 50% अपसाइड हो सकता है काउंटर में। अगला अपडेट है दालमिया सीमेंट के ऊपर। सो दालमिया सीमेंट ने ये एक्विजिशन किया है सीमेंट क्लिंकर एंड पावर प्लांट जयप्रकाश एसोसिएट से। सो ये डील का जो साइज है 57 बिलियन है। एंड और इसका जो ईवी इबिटा का जो वैल्यूएशन है $75 पर टन है। ये जो आप कंपेयर करोगे एसीसी अंबुजा को जो एक्विजिशन हुआ है उससे काफी कम प्राइस में एसीसी और अंबुजा का जो एक्विजिशन हुआ था वो 178 और $127 के प्राइस रेंज में हुआ था। जबकि ये जो डालमिया भारत का जो एक्विजिशन हुआ है वो $57 के प्राइस पे हुआ है। तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छा है। तो ये जो प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में है। ये होने की वजह से जो दालमिया का जो सेंट्रल और ईस्ट रीजन में जो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बढ़ेगा। और हो सकता है कि सेंट्रल रीजन में 10% के करीब उनका मार्केट स्टेक बढ़ सकता है। सो हमारा ये इस पे पॉजिटिव व्यू है। बट ये जो एक्विजिशन है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है जयप्रकाश के अथॉरिटीज और लीगल टीम के थ्रू। बट ये न्यूज पॉजिटिव रहेगा दालमिया सीमेंट के लिए। अगला न्यूज है टीसीएस के ऊपर। टीसीएस के एक एम्प्लॉय ने उनके ऊपर ये आईटी के एलिगेशंस किए हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो नॉन साउथ एशियंस और नॉन इंडियन पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं करके लॉ सूट फाइल किया हुआ है। तो ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी एक बार ऐसे 2015 में हुआ था और वो कंपनी ने 2018 में टीसीएस के फेवर में वर्डिक्ट आया था। सो बेसिकली ये जो न्यूज़ है ज्यादा इससे टीसीएस को नहीं अफेक्ट करेगा, ये हमारा मानना है। अगला एक अपडेट है एचसीएल टेक के ऊपर। तो एचसीएल टेक ने जो मॉडर्निज्म इंटरनेशनल है उन्होंने उनका साथ मल्टी इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है। तो इसके चलते हुए वो एचसीएल ऑटोमेशन और एआई कैपेबिलिटीज ये प्रोवाइड करेगी मॉडर्निज्म को। सो ये बेटर एक्सपीरियंस और एक्सीलरेशन होगा। तो इसका जो है 1.1 लाख एम्प्लॉयज तक के लिए बेनिफिट होता है वो एचसीएल टेक में। तो इसे पॉजिटिव डेवलपमेंट है एचसीएल के लिए। हमारा बाई रेटिंग स्टॉक पे टारगेट प्राइस है 1095। अगला एक अपडेट है मीडिया सेक्टर के ऊपर, जहाँ पे अवतार जो मूवी है उसने ऑलरेडी 3,30,000 टिकट्स एडवांस बुकिंग में बेचे हैं पीवीआर आइनॉक्स और सिनेपोलिस ये शुक्रवार के और सैटरडे संडे तक के लिए। आगे उसके बाद जो दृश्यम 2 जो मूवी चल रहा है उसने भी 200 करोड़ का बिजनेस कर चुका है मार्केट में। और ये शायद ये नंबर शायद और बढ़ेगा ये वीकेंड के लिए। तो इस वजह से हमें लगता है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीवीआर और आइनॉक्स के लिए। जबकि हमने एक वीडियो के तो जो खराब नंबर्स देखे थे उसके बाद ये कुछ अच्छा अच्छा सुनने को आ रहा है। तो हमारा बुलिश व्यू है पीवीआर और आइनॉक्स में। पीवीआर पे 2100 और आइनॉक्स पे 630 रुपया ये टारगेट प्राइस मेंटेन करके चल रहा है। अगला अपडेट है इंडियन होटल के ऊपर। तो उन्होंने धर्मशाला में
एक नोरूप करके उन्होंने होटल्स ओपन किया और ये रहेगा सिलेक्शन होटल्स के अंडर। ये उसके 31 रूम्स है एंड सूट्स है, और ये जो रूम्स के जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल लोकल कल्चर के जो अट्रैक्ट करते हैं उसके हिसाब से वो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। इसके वजह से उनका जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे उस लोकेशन में बढ़ेगा। ये इस होटल के एक्विजिशन से ये इनका फोर्थ होटल होगा हिमाचल प्रदेश में, और दो है जो अंडर डेवलप मीन्स अंडर प्रोसेस है। So, आगे शायद और दो होटल्स भी आएंगे। तो हमारा IHCL के ऊपर बाय रेटिंग है, हमारा जो टारगेट है 347। एक JSW स्टील के ऊपर एक अपडेट है, तो गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको प्रोजेक्ट को क्लियर अप्रूवल दिया है स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। ये इन्वेस्टमेंट रहेगा 88 बिलियन का। सो तो जो एक कंपनी क्या करेगी, तो पहले तो 33 बिलियन फर्स्ट फेज में करेगी, जो इन्वेस्ट करेगी, जो प्रोड्यूस कर सकती है 1 मिलियन टन ऑफ स्टील। और ये ओवरऑल 3 फेजेस में होगा, और ये अचीव करेंगे 3 मिलियन टन ऑफ स्टील। अगला एक अपडेट है मारुति सुजुकी के ऊपर। कंपनी बता रही है कि वो फर्स्ट एक सेगमेंट ऐसे ला रही है जहाँ पे वो फ्लेक्स फ्लू प्रोटोटाइप कॉल, जहाँ पे एथेनॉल और पेट्रोल के कॉम्बिनेशन से जो ये कार चलेगी, तो ये मॉडल वो लेके आ रही है। ये पॉजिटिव न्यूज होगा मारुति के लिए। और इसके एथेनॉल और पेट्रोल की वजह से शायद शुगर स्टॉक्स पे भी आपको शायद एथेनॉल की वजह से आपको शुगर स्टॉक्स पे भी थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगला एक अपडेट है वी गार्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो कंपनी ने बताया कि वो 100% स्टेक बाय कर रही है सनफ्लेम एंटरप्राइजेस पे 660 करोड़ के लिए, और ये एक्विजिशन वो जैन 2023 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है पेटीएम के ऊपर। तो कंपनी 13 दिसंबर को मिलेगी, जो आज है, वो प्रपोजल बायबैक के बारे में बात करने के लिए। ICICI बैंक के ऊपर एक अपडेट है। ICICI बैंक ने कहा कि उन्होंने 5,000 करोड़ बॉन्ड के थ्रू उन्हें रेस किया है। ये ये फंड करेंगे उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और ये बॉन्ड जो रिडीम होगा 7 इयर्स के बाद। तो इस बॉन्ड कोई स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज नहीं है ये बॉन्ड के साथ। अगला एक अपडेट है महिंद्रा CI ऑटोमोबाइल को। ये जो ऑटो एंसिलरी जो कंपनी है उसने 27.3% इक्विटी स्टेक एक्वायर किया है एक स्ट्रॉन्ग सन सोलार ये कंपनी से 2.4 करोड़ के लिए। ये इन्वेस्टमेंट से कंपनी उसके जो पावर कॉस्ट और कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी की ये सेगमेंट में वो ये इसको बेनिफिट करेगा। उसके बाद है एक अपडेट है ONGC के ऊपर। कंपनी ये प्लान कर रही है कि वो नए 53 वेल्स ड्रिल करेगी आंध्र प्रदेश में। 50 करेंगे वो गोदावरी के लैंड पे, जो पेट्रोलियम माइनिंग लीज है। और जो KG बेसिन 21-28 के जो रेंज में आता है। और बाकी की जो 3 है वो CDONHP ये कोई है उनका जो उस पे करेंगे। और इसका जो इन्वेस्टमेंट आउटलेट है वो 2,150 करोड़ है। तो ये देखने जैसा रहेगा कि क्या होता है करके। उसके बाद एक अपडेट है रूट मोबाइल के ऊपर। ये जो कंपनी के जो 356 एक युगांडा टेलीकम्युनिकेशन के साथ उनका एक एग्रीमेंट साइन था। तो वो जो कंपनी ने स्टेप डाउन किया है। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्न बेस के ऊपर ये फायरवॉल सॉल्यूशंस वगैरह करते थे। अ, तो ये जो अपडेट है तो शायद ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज हो सकता है रूट मोबाइल के लिए। उसके बाद हमने हालांकि लेटली देखा कि इंडिया चाइना के जो सोल्जर्स है उनके अरुणाचल प्रदेश में थोड़े क्लैशेस देखे, और वहाँ पे काफी सारे मेजर इंजरीज देखने को मिला। तो स्लाइटली ये नेगेटिव न्यूज है ये। हालांकि ये न्यूज 3-4 दिन पुराना है, तो इसका जो इफेक्ट है ऑलरेडी मार्केट में शायद ये आ चुका होगा। सो थोड़ा सा कॉशियस रहते इस न्यूज के चलते। अगला एक है NTPC के ऊपर। NTPC स्टेक सेल करता एग्जिट कर रहा है PTC इंडिया से। सो PTC इंडिया के लिए बेसिकली टाइम नेगेटिव न्यूज होता है, और जबकि हाँ NTPC के लिए ये पॉजिटिव न्यूज माना जा सकता है।
लास्टली लोधा का जो QIP आया था उन्होंने रेज किया था 3,547 करोड़। इस वजह से उनके जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में जो एग्जिस्टेंस है वो बड़े हैं, 25 नियरली 25%। तो ये काफी ज्यादा डिमांड हमें लगता है लोधा में देखने को आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो हमें लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज हो सकता है लोधा के लिए। Technical derivatives update. If you see in yesterday's trading session, Nifty opened on a gap down mode, and with the gap down of it, broke initially the support of 18,400 levels. And but from those levels, we saw an intraday bounce back within the next 15-20 minutes, and it linked the 18,400 level. So if we see overall that it was of 7 days of correction, yesterday's candle which has formed. So that could now act as the intermediate support, and this support of the yesterday should not be breached. If Nifty today's session moves above 18,600 levels, then we can say then we can again reclaim back 19,000 levels, or else if 18,400 is retested again, and if we get a closing below that, then 18,100 and 18,000 would be the ideal level for the Nifty, which acts as a 40% retracement from the highs of 16,800, from the lows of 16,800 to 19,000 levels. On the sectoral front, if we see, then PSU banks, oil and gas, and realty traded on the positive side, while IT is still traded in the negative too. And on the Bank Nifty, if we see, Bank Nifty was again in the sideways mode only. It was just holding its levels and it moved higher to make more higher near 44,000 levels. That is 43,700 yesterday's close on the Bank Nifty front. If you see, then SDFC and SDFC banks were the gainers, while on the PSU side, PNB and Bank of Baroda were on the positive side. So if we see the stock churnings are happening in the Bank Nifty index, and which is helping the Bank Nifty to stay afloat. On the Nifty derivatives front, if you see, there was a short covering in the index by 3%, that is a reduction of 3 lakh shares, and the PCR also jumped from 0.76 to 0.91. So still PCR is below 1 level, so still the market is under oversold category. And if the PCR goes above 1, then it would be a game changer for the market and it would start trading. And vis-a-vis Bank Nifty is also PCR has jumped from 0.97 to 1.95, and there was a new fresh long build-up in the index by 4% with the addition of 1.2 lakh shares. On the options front in the Nifty, if we see, then 18,600 is acting as a support for the Nifty. 18,600 is acting as a resistance, and 19,000 call options. While on the put side, if we see, then 18,400 and 18,500 are the two zones where index could find support. And on the Bank Nifty fund, the 43,500 put is acting as a base over there, and 44,000 call option will act as a high. Top 3 long builders were seen in UBL, Dalmia Bharat, and Honeywell Automation, while top 3 shop builders were seen in Metropolis, Alchem, and Crompton. On the FIS front, if you see in the cash, they sold to the tune of 140 crores, while the DIS bought to the tune of 696 crores. And on the futures front, if you see, they were net buyers by 6,000 contracts. So their overall long short is maintained at 59 or 60% to be taken up by 32,000 contracts. So today we have given a position buy call in Devyani International. One can buy in the range of 190 to 192 with a stop loss of 184 and a target of 212. And today SGX is again also showing a morning gap up by 34 or 50 points. So if this holds over 18,600 levels, it will be positive for them. Thank you and good morning also. On the fundamental side, we have come out with an initiating coverage on Ahluwalia contracts. Ahluwalia contracts is a key beneficiary of infra and industrial capex in India. Company provides turnkey solutions to construction of vertical structures, and overall, they have seen many multiple capex cycle in India, and it has consistently delivered positive operating cash flow. Order inflow is in cyclical uptrend for Ahluwalia contracts, and we expect it to close FY23 with highest ever annual inflow. Key positives in Ahluwalia is management with vast experience, its execution capabilities with steady cash flow and a lean balance sheet. Hence, we have initiated buy rating on the stock with a target price of 650 with a base case of offering a minimum upside of 50%. Second is on Dalmia Cement.
So Dalmia Cement announced acquisition of cement, clinker and power plants from Jaiprakash Associate. This deal is done with an enterprise value of 57 billion and EV by EBITDA valuation of 75 per ton, which is relatively very lucrative, considering that Ambuja ACC acquisition was valued at 178 and 127 per ton. The company will expand its current capacity from 37 to 46 million ton, and the plants are situated in central India, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh. Uh, with this acquisition, they will have 10% market share in central region. This acquisition is in line with the company's goal to become a pan-India player with a capacity of 75 million ton by FY27 and 110 to 130 by FY31. This transaction is subject to due diligence and requisite approval from lenders and JV partners. Third, on TCS. TCS has been sued by one of its former employees who alleged that the IT firms discriminates against non-South Asian and non-Indian applicants and employees. This is not the first time that the Indian software company has been slapped with a lawsuit. A similar lawsuit was filed in 2015, which the company won in 2018. At that time, the jury determined that TCS did not have a pattern or practice of discriminating against non-South Asian workers. The complainant was on TCS payroll for 9 years, and we do not believe that this will have material impact on the company. On HCL Tech, Mondelez International has expanded its multi-year contract with HCL Tech to enhance cybersecurity and transform digital workplace. As a part of this deal, HCL will leverage its automation and AI capabilities to enhance Mondelez to provide better user experience and accelerate issue resolutions to its 1.1 lakh employees. This is a positive development for HCL, and we have a buy rating with a stock target price of 1095. On Tata Motors, the company's board has given an in-principle approval for partial divestment of company's investment in subsidiaries, that is Tata Technology, via an IPO route. Media sector, Avatar has sold over 330,000 tickets through advance booking across PVR, Inox, Cinepolis for this Friday, Saturday and Sunday. Also, Drishyam 2 has crossed 200 mark. And it is expected to surpass this number this weekend. This we believe is a positive development for PVR and Inox, especially after a bad Q2. We have a target price of 2,100 for PVR and 630 for Inox. On IHCL has opened a Selection Hotel in Dharamshala. The hotel has 31 rooms and has been conceptualized around local culture. This will strengthen IHCL's presence in key leisure destination in India. Currently, we have a hold rating on the stock with a target price of 347. On Exide Industries has decided to explore the possibility of merger of its wholly owned subsidiaries, Exide Energy Private Limited and Exide Energy Solutions, owing to their similar business, and which is in the manufacturing of lead acid and advanced chemistry cells. On JSW Steel, the AP government has cleared JSW proposal to set up steel plant at Kadapa district with an investment of 88 billion. Company will initially invest 33 billion in phase 1 to produce 1 million tons of steel. Total, there will be 3 phases which will produce 3 million tons of steel. On Maruti Suzuki, the company has unveiled its first mass segment flex fuel prototype car designed to run on any ethanol petrol blend. This, bodes well for all those ethanol producing companies and also for sugar companies. V-Guard Industries, the company has signed definitive agreement to acquire 100% stake in Sunflame Enterprise for 660 crores by mid of January 2023. And on the last news, 197 Communication, that is Paytm, the board of the company will meet on December 13 to consider the proposal of a share buyback. That's it from my end. Over to you, Kshitija. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side.
So ICICI Bank has raised 5,000 crores through bonds to fund the business growth. So the bonds are redeemable at the end of the 7 years, and there are no special rights or privileges attached to the bond. Next update on KC International. The infra EPS major KC International has received order of 1,349 crores across its various business. The transmission and distribution business has secured order for T&D projects in India, SSARC, Middle East and America, while the business has bag orders for a building, data center and other segments. The next update on Mahindra CI Automotive. The auto ancillary firm has acquired 27.35% equity stake in Strongsun Solar for 2.4 crores. The investment in Strongsun will help the company optimize the power cost, increase the consumption of green energy at its various power intensive plants. Then next update on ONGC, the company plans to drill 53 exploratory wells in Andhra Pradesh, 50 in Godavari on land PML, petroleum mining lease, block for KG basin during 2021 to 28, 3 in CDOHNP and block of Kudu basin with an investment of outlet of 2,115 crores. Last update on Route Mobile, the company will own step down subsidiary 365 Squared sign an exclusive agreement with Uganda Telecommunication Corporation to provide artificial intelligence or machine learning based on A2P SMS firewall solution. The management asserted that the firewall solution will minimize revenue leakages and eliminate grey routes for Uganda Telecom. So that's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar sir. Over to you, sir.